फैजान, वेलकम टू योर पीडिया प्लेटफॉर्म। स्टार्ट करते हैं आपका फुल मॉक फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड। यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। I am from yes. यस, ठीक है। फैजान, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। Sir, my name is Mohammad Faizan. I am from Lucknow. I have completed my schooling from Lucknow CBSE board and my B.Tech from Jamia Millia Islamia in 2018. And since then, I have been preparing for GATE and other similar examinations. And this time I have reached till the Oil India Limited interview. Okay. Have you given any interview, other interview? Sir, recently I gave a polytechnic lecturer interview. Okay. So what was the result? Has result came out or winning? Sir, I got selected as a polytechnic lecturer, but I aspire to be an engineer in the specific. Okay. Okay, Faizan, what do you know about Oil India Limited? Sir, Oil India Limited was formed in 1959 as a government company. Earlier, it was part of Burma Oil Company, which was established in 1800 something, and until now, it is a complete upstream company which has expertise in petroleum and liquid petroleum and liquid petroleum gases. Okay, what do you mean by upstream company? Sir, upstream company means it is totally involved in the exploration and production of crude oil and the other gases and petroleum gases. लेकिन प्रोडक्शन तो अभी nowadays day by day decreasing order में है, तो क्या लगता है आपको what will be the future of oil industry? Sir, I think we have been hearing this that the oil resources will dry up from a very long time, but it still hasn't dried up. Okay, so I think it is going to continue for 25 or 35 years. But since Oil India Limited is an energy company basically, so I think in future it will going to enter into the market of energy, which is solar and other non-renewable fields. So solar energy कैसे generate होती है? Sir, solar energy is generated from the photovoltaic cells. These photovoltaic cells convert the incoming sunlight into electrical energy. Okay. तो ये सेल किस चीज के बने होते हैं? Sir, the cells are made. Sir, the building of solar cells is like this. There's a PN junction in the solar cell on which the N side is lightly doped and the P side is highly doped. Now, since the N side is lightly doped, the width of the PN junction is more in the N side. Now, since the width of the PN junction is more, the sunlight which is coming from the sunlight strikes at the PN junction. Now, this sunlight creates an electron hole pairs. This electron hole pair is due to the electric field in the PN junction. The electron is taken to the N side, and the hole pairs are taken to the P side. Now this creates a potential difference, and this happens on a regular basis. This creates an accumulation of electrons and the accumulation of holes. This creates a voltage. This creates a voltage difference between the two sides, and thus, when connected to any appliance, it conducts electricity. Okay, what is the maximum efficiency till now we have achieved for the solar? Sir, till now we have achieved 16%, I would say, sir. Earlier it was 13%, but now we have achieved till 16%. 21% तक अचीव हो चुका है।
Sir, this was the range I had. Okay, okay, sir. 15 to 21%. ओके, आपने मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन सुना है, क्या होता है? Yes, sir. Monocrystalline and polycrystalline. Yes, sir. And there is also a third category of cadmium transistors, which are very efficient. ओके फैजान, अपनी 5 क्वालिटी बताइए जिससे कि हम आपको हायर करें, क्या लगता है? Sir, I think I'm a good team player and good at taking approximations and sometimes good at meticulous planning. Okay. So, give an example of your life where you played the role of team player. Sir, I would like to from my project, from the project which I confirmed, my project was to integrate MPPT charge control and sun tracking of the solar panel, in which my responsibility was to implement the mechanical tracking of the solar panel, and I completed it with not only mechanical tracking but other aspects of the project as well. So I think I can know if someone is lacking and help them in that area. So I can help them, and I can, and if someone is doing great job, I can learn from him to do the work more efficient, to do the work more efficiently. ये MPPT क्या है? Maximum power point tracking. Maximum power point tracking. तो maximum power कहाँ पे अचीव होती है हमें? Sir, it is a point. It is a point where how should I say this? It is a point in the graph of the solar cell where the power is maximum with respect to the peak point at which power is maximum with the certain power equals to V into I. Yes, power is V into I. Yes. Yes, sir. So value of power where will be the maximum? Sir, where the product of V and I is maximum. V and I product maximum कब होता है? दो quantity का. Sir, at which it is. जहाँ पे numerical value दोनों की equal हो. जहाँ numerical value दोनों की equal हो. Okay, sir. तो ऐसा possible है? Sir, numerical value equal. I can't understand numerical value equal, but we have to look at the graph that is coming on the VI, and it might be possible that graph does not contain a point where V and I are maximum. So when we are moving a graph, we have to go to that point that gives us maximum. graph को उसमें वहाँ पे क्या value होती है, ठीक है? It is the theoretical value where the V and I दोनों बराबर होंगे तो maximum होगा, ठीक है ना? प्रैक्टिकली कैसे उसको किस लेवल पे वो मैक्सिमम हो सकता है, उस चीज को चेक करना, ग्राफ को स्टडी करना जो आपने पढ़ा है, ठीक है? ओके सर. कि कौन-कौन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ के आए? सर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम्स. इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम. अच्छा, क्या होगा अगर सब जगह से मैं ग्राउंड हटा दूं? जो भी मैंने ग्राउंडिंग कर रखी है न्यूट्रल की, यस सर, सब जगह से मैं हटा दूं, क्या होगा पूरे इंडिया में? सर, है आइडिया? सर, अच्छा, एरोप्लेन की अर्थिंग कैसे करते हैं? यस सर. एरोप्लेन की अर्थिंग कैसे करते हैं? सर, which plane? Aeroplane. Yes sir. It is on the frame of the aeroplane is used as earth. The frame of the aeroplane.
the outer body. अच्छा, जैसे लैंड करता है उसका चार्ज को डिस्चार्ज किया जाता है? Sir, no, sir. The charging and discharging is done by the by the wings that are made. The wings are made up of aluminium. So any charge and discharge is done by the wings. I don't think that on landing any discharging is done, as the tires are made up of rubber. So it cannot be through ground. ठीक है फैजान, नाउ सर विल टेक टेक्निकल. राजीव. हेलो राजीव. Okay, Faizan. Good afternoon, sir. Afternoon. Am I audible? Yes, sir. Audible. तो फैजान, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है पावर सिस्टम एंड मशीन. Yes, sir. अच्छा, एक चीज बताइए, Yes, sir. लोड फ्लो क्या होता है? Load flow. The load flow is the amount of power generated and the power utilized by the at different buses is called load flow. अच्छा, एक चीज बताइए, लोड शेड्यूलिंग क्या होती है? Load scheduling, the calculation of determining for what amount of time and at which time you have to run which power station or generator is called load scheduling. कौन से ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं जनरली? Sir, in generation रिफाइनरी यूनिट में? sir, refineries में. हाँ, Sir, I think distribution transformer to run the various auxiliary equipments. Because if there is a generation going on, then we will need a generating transformer as well. जेनेटिक ट्रांसफार्मर क्या होता है? Sir, the transformer which is connected to the generator to increase the generated voltage up to certain level so that it can be distributed to far areas. अच्छा, मान लेते हैं मेरे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आया, ट्रांसफार्मर और मतलब आउटकमिंग में पावर नहीं आ रही है. Okay, sir. तो आप क्या करेंगे आप? Sir, first I will open the switches from both sides. First I will open the circuit breakers. Then I will open the switches, and at the last stage I will close the earth switch and then open the transformer to look what fault is in the transformer. And after clearing the fault inside the transformer, I will open the earth switches and close the switches and then close the circuit breakers. डिजॉल्व गैस एनालिसिस क्या होता है? Sir, the transformer oil on heating produces various types of gases. So if there is some problem in the transformer, the heating and the turbulence inside the oil produces violent gases. Violently produces many gases. The analysis of these gases is called analysis of these gases is called dissolved analysis of the gases. This analysis can tell us if the fault is grounded or there is some small fault or there is a large fault. कौन सा ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में? Sir, I can't remember the name of the oil transformer. अच्छा, ठीक है. एक चीज बताइए, अगर जो ट्रांसमिटिंग टावर होती है, Okay, sir. ट्रांसमिटिंग टावर की हाइट किससे डिसाइड की जाती है? Sir, the amount of voltage the transmitting tower is carrying, that decides the height of the tower.
अरे किसी भी ट्रांसमिटिंग टावर में ये रिले और रिले कहाँ लगा होता है? Sir, relay, sir, sir, I think relays are present on. Sir, I haven't seen relays on transmitting towers, so I think they are present on the ground. ग्राउंड में कौन सा रिले होता है? Sir, impedance relays are used on long transmission line. More relays are used. तो इफेक्टिव ग्राउंडिंग क्या होती है? Effective grounding. Sir, sir, grounding without connecting any resistors. That is called effective grounding. बिना रजिस्टर के ग्राउंडिंग होती है? Sir, this is what we call solidly grounded. किसमें की जाती है? Which equipment? Sir, it can be solidly grounded. It can be used in the transformers. Transformers भी use होती है sir. और सर जनरेटर्स में नहीं यूज करते हैं. जनरेटर्स में सर हम रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग यूज करते हैं और मोटर्स में हम इंडक्टेंस ग्राउंडिंग यूज करते हैं. अच्छा एक चीज बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हम डिजाइन करते हैं? सर हम सबसे पहले सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं. हम डबल बोथ साइड्स से पावर को फीड कर सकते हैं. हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स डिजाइन करते हैं. हम रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करते हैं. रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या क्या एडवांटेज हैं? Sir, the ring distribution system is costly, but it has high reliability. If the power is not coming from one side, then it can be converted into it is converted into it can be converted into how should I say a double feeder connection. So by clearing the fault, we can convert it into double feeder connection. So पावर कन्वर्ट होता है इसमें? पावर कन्वर्ट होता है या पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है सर. पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसके डिसएडवांटेज क्या है? सर डिसएडवांटेजेस, सर इट इज कॉस्टली. It is costly to implement because it requires a lot of wires and to connect all the feeders and consumers. अच्छा एक चीज बताइए, किसी भी पावर सिस्टम डिजाइन में सर्किट ब्रेकर और रिले किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं? Sir, the purpose of the first one to sense anything is relay. The purpose of the relay is to sense the abnormality in the circuit. So the relay senses the abnormality and sends a command to the circuit breaker. Then circuit breaker circuit breaker disconnects itself from the grid so that the fault is not spreaded. And it is a very coordinated response. So like it is done within milliseconds. The relay senses it and sends the command to disconnect. SCADA क्या होता है? Sir, SCADA is a system that is used to supervise, control and acquire the data from the grid. And the purpose of SCADA is to monitor and automatically issue commands or sometimes manually issue commands to make sure that the grid is working properly. अच्छा ठीक है. अच्छा इंडक्शन मोटर का मोस्टली यूज करते हैं इंडस्ट्री में. Yes, sir. इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जब भी हम ड्राइव यूज करते हैं
इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जो भी ड्राइव यूज करते हैं, किसी ड्राइव का ड्राइव कितने टाइप के होते हैं? सर इंडक्शन ड्राइव मोटर ड्राइव ड्राइव्स सर आई कांट रिमेम्बर ड्राइव्स। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर हम पावर सिनेरियो को डिवाइड करेंगे ओके तो सर। हाँ, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कितने कितने परसेंट है इंडिया में? Renewable and non-renewable, sir, the renewable is close to 50 gigawatts till now, and non-renewable is 360 gigawatts, closing to 410 gigawatts in total. ठीक। अगर हम रिलीज की बात करें तो रिलीज में अट्रैक्शन टाइप रिले में क्या डिसएडवांटेज है इस रिले का? Yes sir. अट्रैक्शन टाइप रिले के क्या क्या डिसएडवांटेज है? इंडक्शन टाइप रिलेज के अट्रैक्शन टाइप रिले अट्रैक्शन टाइप रिलेज में सर डबलिंग इफेक्ट होता है, वो अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सो दे हैव ड्यूरिंग द पावर साइकिल ऑफ दे डबलिंग इफेक्ट होता है सर उनमें। वो उनका कॉन्टैक्ट्स जो है वो कभी ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है फिर ऑन, तो एक साइकिल में 2 बार वो मतलब उनके कॉन्टैक्ट्स आपस में टच करते हैं और छूट जाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले क्या होती है? Restrictive, sir, it is used to detect and protect the windings from earth faults. A percentage of winding is protected with this earth fault relay, and main of the relay is to protect the winding of the generator. अच्छा, वाइंडिंग की बात की है, तो मुझे बताइए कि टाइम हार्मोनिक और स्पेस हार्मोनिक वाइंडिंग में किस तरीके से कनेक्टेड होता है? Sir, the winding is connected in space as well as time. How should I say this? It is distributed in space as well as distributed in time. अच्छा, एक ही बताइए, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सीरीज कंपनसेशन और शंट कंपनसेशन, ठीक है? Yes sir. हाँ, सीरीज कंपनसेशन और शंट कंपनसेशन, फैक्ट को अगर हम डिवाइड करें तो फैक्ट के 2 या 3 टाइप में आते हैं, तो एक आता है आपका सीरीज कंपनसेशन और शंट कंपनसेशन। Yes sir. इसके बारे में कुछ पता है क्या होता है? सर शंट कंपनसेशंस जनरली हम रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, और सीरीज कंपनसेशंस हम लाइन की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। क्योंकि सर जब हम सीरीज कंपनसेशन लगाएंगे तो VEF/X का जो फैक्टर है, जो X बहुत रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारी जो लाइन की कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो फॉल्ट लेवल होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और शंट कंपनसेशन से हम रिएक्टिव पावर कंट्रोल के लिए हम शंट कंपनसेशंस यूज करते हैं। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, इफ द मोटर इज रनिंग, आपने लेबोरेटरी में मोटर टेस्ट किया है? मोटर टेस्ट यस सर किया है। कौन सा मोटर का टेस्ट किया है? सर मैंने इंडक्शन मोटर्स का टेस्ट किया है, ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, अच्छा, ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या क्या किया आप? यस, इंडक्शन मोटर्स पे ब्लॉक रोटर टेस्ट एंड दैट नो लोड टेस्ट। क्या क्या किया आप टेस्ट में?
सर नो लोड टेस्ट में मोटर को मोटर पे से सारे लोड हटा, हमने मोटर को कनेक्ट किया और उससे सारे लोड हटा दिए। जब मोटर फ्री फॉल में चल रहा था तो बहुत सिंक्रोनस स्पीड के बहुत इट वाज अप्रॉक्सीमेटली रनिंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड and we measured the voltage, current and power. So using these components we try to find out the shunt components of the induction machine. Now in the blocked rotor test, we blocked the rotor and allowed it to draw full current at some voltage. So during this the full current was flowing and the power used was only dissipated in the resistive parts, series parts. So using power, voltage and current, we tried to find out the series components of the induction machine. ठीक है शहजान, बाकी तो Yes, आपका सही है, अप्रोच भी सही है। कि कभी कभी क्या होता है ना, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन पूछ ही जाएंगे, टेक्निकल केस स्टडी। कोई भी इक्विपमेंट है अगर वो खराब हो गई तो क्या क्या होगा। दूसरा चीज क्या है कि जैसे ऑयल इंडस्ट्री में है तो आप इलेक्ट्रिकल, हेलो, ये समझ रहे हैं सर आप सर। हाँ हाँ प्रोफेशन, तो एक बार देख लीजिएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में भी एक बार देख लीजिएगा रिफाइनरी यूनिट में। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इलेक्ट्रिकल टर्म से कन्वेयर बेल्ट आता है, मोटर आता है, रिलीज आते हैं, सेंसर आते हैं, ठीक है, बॉल्व आते हैं, ये सारे इक्विपमेंट होते हैं। और भी जो भी ड्राइव होते हैं, इन सब से क्वेश्चन आएगा। और कुछ क्वेश्चन पॉलिट्रॉनिक्स से भी आ सकते हैं, ओके यानी सर। नंबर ऑफ थैरिस्टिक्स, ठीक है, सीआर, ठीक है। सर और अभी हाँ जी, सर अभी एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि क्या होगा अगर से हम पूरे इंडिया में से अर्थिंग हटा दें, तो यही होगा ना सर कि प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा हर इक्विपमेंट में से। देखो अगर पूरे इंडिया से अर्थिंग अगर हम हटा दिए तो एक बेस रेफरेंस ही हम हटा दिए, ठीक है। तो अगर ओके सर। रेफरेंस हटा दिए, हम किसी भी सिस्टम का रेफरेंस ही अगर हम हटा दिए तो हम्म, सिस्टम तो सिस्टम में कितना भी वोल्टेज जा रहा है तो हम्म, फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिस्टम का कोई भी रेटिंग है तो वो तो डैमेज हो जाएगी ना फिर। मतलब हम, अच्छा ओके सर, डैमेज हो जाएगी। दो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आते हैं आपका अभी उसको बोला जाता है आपका न्यूट्रल ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग में क्या होता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को ग्राउंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो भी मेरी वोल्टेज है वो स्विच ओवर कर जाएगी, यानी कि सारे फेज में 220 वोल्टेज या 220 वोल्टेज सप्लाई नहीं होगी। इस केस में क्या होगा कि ऑसिलेटिंग न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक ओके है। सर। ऑसिलेटिंग न्यूट्रल, फ्लोटिंग न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगी कि फेज में वोल्टेज डिसाइड नहीं होगी और लॉसेस फिक्स नहीं होंगे। तो लॉसेस को डिटरमाइन करने के लिए, सिस्टम को स्टेबल करने के लिए जनरली अर्थिंग का यूज करते हैं, ओके सर। ठीक है। लॉसेस को फिर कम करने के लिए और सिस्टम हाँ को फिक्स करने के ऑसिलेटिंग, लिए। हाँ ओके सर। ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन जो और मैं देख रहा था कि जैसे हमारे घरों में हर जगह सिंगल फेज कनेक्शंस आते हैं, तो ये सिंगल फेज कनेक्शंस बहुत सारे घरों में है, तो हम थ्री फेज पे बैलेंसिंग कैसे पाते हैं डोमेस्टिक लोड्स के केस में? मतलब कहीं तो बैलेंसिंग होनी चाहिए, वो बैलेंसिंग हाँ पॉसिबल ये नहीं होती है। नहीं, देखिए क्या होता है ना, जब आपके घरों में भी अर्थिंग होती है, बिना अर्थिंग के सप्लाई नहीं आती है, और जहाँ कहीं भी केवल सिंगल वायर से कनेक्टेड किया गया है वहाँ वो डिफरेंस पहले से देते हैं, यानी कि डिफरेंस इज मस्ट है, रेफरेंस इज ठीक। मस्ट। हाँ डिफरेंस इज मस्ट। सर हम लोग डिफरेंस हमेशा प्रोवाइड करते हैं। रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए देखिएगा जो भी एसी के कनेक्शन होते हैं या हाँ। फिर जो भी हाईली डिजाइन इक्विपमेंट होते हैं उसकी वायरिंग अलग से की जाती है, ओके सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू राजीव। सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो अनबैलेंस लोड ही होता है ट्रांसफार्मर पे हमेशा।
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे अनबैलेंस लोड होता है, लेकिन उसका न्यूट्रल ग्राउंड होता है, तो वोल्टेज हर फेज में वो सेम रखता है न्यूट्रल ग्राउंड होने की वजह से। जो भी अनबैलेंस करंट होती है वो ग्राउंड के थ्रू फ्लो करती है एक्स्ट्रा। ओके सर। ठीक है। और प्राइमरी उसकी डेल्टा कनेक्टेड होती है, तो वो सर्कुलेटिंग करंट उसमें फ्लो करा देता है। तो जो लाइन है, लाइन में हमारी बैलेंस वोल्टेज ही रहती है। ठीक है, लाइन में बैलेंस वोल्टेज ही रहती है। हाँ। करके देखो, बना के देखो, एक ट्रांसफार्मर बनाओ, उसको सिंगल सिंगल फेज की सप्लाई दो और फिर देखो उसमें क्या होगा। ठीक है ना, अलग अलग फेज में जाएगा, तो न्यूट्रल से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट है वो ग्राउंड Yes. न्यूट्रल के थ्रू आता है। ठीक है ना। अगर अनबैलेंस इतना ज्यादा हो गया कि न्यूट्रल का करंट जो उसकी बेरिंग हाफ कैपेसिटी का बनाते हैं उसको, न्यूट्रल को 3.5 कोर ऐसे ही बनाते ना। 3.5 times, नहीं, 3.5%. जो सप्लाई सिस्टम होता है 4 वायर सप्लाई सिस्टम, उसमें Yes, sir. न्यूट्रल का जो साइज होता है मेन वायर के साइज से हाफ होता है, अच्छा, डायमीटर। डायमीटर। तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी हाफ होती है। ठीक है। तो जो अनबैलेंस करंट होती है वही न्यूट्रल से फ्लो करती है। ठीक है, अदरवाइज Yes. न्यूट्रल से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी अगर बैलेंस लोड हो। Okay, sir. ठीक है। Yes, हाँ। sir. फैजान, ये तो हम शायद आपसे पहले भी, और ऑयल रिलेटेड क्वेश्चन तो उसमें मैंने पूछे, आपने आंसर भी किए थे Yes, sir. तो पुराने स्नैप्स में। ठीक है ना, तो वो मैंने आज पूछे नहीं है, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड पता होना चाहिए। नेट जीरो टारगेट क्या है नेट आपका, जीरो टारगेट इमिशन है, COP26 के बारे में सर मैंने पढ़ लिया है पूरा। और वो सारे आइडिया होने चाहिए आपको। नैप्था क्या है, एथनॉल क्या है, ये सब आपने बताया ही था मेरे को उसमें एक बार। Yes, sir. है ना, ये क्वेश्चन मैंने पूछे नहीं। बैरल क्या होता है, बैरल इंटरनेशनल मार्केट में यूनिट क्या है क्रूड ऑयल की, तो वो। ठीक है। अपस्ट्रीम कंपनी के बारे में आपने बता दिया, डाउन स्ट्रीम कंपनीज कौन सी होती है उसका भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना। Yes, sir. और कहीं पे जब अटक जाते हैं तो आप शांत रह जाते हैं, मुस्कुरा दे देते हो जाते हैं, तो सॉरी सर बोल के रुक सकते हैं आप कि सर पता नहीं मेरे को, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। Okay, sir. तो ऐसा लगता है कि अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज है। ठीक है ना, तो एक थोड़ी देर सोच के या तो मना कर दो या फिर सॉरी सर बोल दो। ठीक है ना। Okay, sir. है ना, तो ये है, अदरवाइज ऑल गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गुड लक, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। और वो थैंक यू सर। एमपीपीटी जरूर देखना है। ठीक है ना। अच्छा, MPPT सर, वो पॉइंट ही, अच्छा ठीक है सर, मैं प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ओके सर। ठीक है, चलो, गुड लक, ऑल द बेस्ट प्रधान। ठीक है सर, थैंक यू सर।